with word equations beta. So I am first solving the NCERT questions. ठीक है. So first is question number 5, that is hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. Hydrogen is a gas, so this has to be written in the form of a molecule. तो जो भी gaseous form में exist करते हैं वो हमेशा stable होते हैं molecule के form में. ठीक है. That is again is nitrogen. Nitrogen is also a gas, so I am going to write N2. So what is going to form? NH. The valency is 3 here and hydrogen is 1 here. So it is going to crisscross method. So it is going to form what? NH3. That's your ammonia. So since it's not balanced, I have to balance it up. So first hydrogen here is 2 and here it is 3, and nitrogen it is 2 here and it is 1 here. So it is easier to balance nitrogen. So multiply it by 2 here. तो इसके 2 के लगने से हाइड्रोजन पहले 3 थे तो into 2 it becomes 6 here. ठीक है. तो ये 6 बन गया. तो मेरा नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया but hydrogen becomes unbalanced. So what I have to do is I have to multiply it by 3 to make it 6. Now the equation is become balanced. Okay, let's start with the second part. That is, second is hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. Okay, so it's a gas, hydrogen sulfide, hydrogen और सल्फर है तो इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 2. सो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? H2S. ठीक है. Anything that burns in air always combine with oxygen, so it will give you O2 to give you the water, that is H2O, and sulfur dioxide, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो बस it would be sulfur dioxide, that is SO2 would be formed. Now, so let's count the number now of the elements. Okay, here the hydrogen is 2 and here the hydrogen is 2. Okay, then sulfur here it is 1 and here 1. Oxygen is here 2, but 2 plus 1 that is 3. जब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये ऑड होता जा रहा है लेकिन ये दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम पहले उस टर्म को इवन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पे जो इवन नंबर है वो इजीली किसी से मल्टीप्लाई हो जाए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 हियर सो दैट हियर ऑलरेडी द ऑक्सीजन इज 2 and 2. 3 plus 1 it becomes 4 now. ठीक है. इस तो क्या हो गया, ये 4 हो गया. तो अब इसे बैलेंस करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. अगर दोनों जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे तो जो उसको ऑड बना रहा है उसके आगे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके उसको इवन बनाना होगा, तो हमारी बैलेंसिंग बहुत आसान हो जाती है. ठीक है. लेकिन इस 2 के लगने से व्हाट हैपेंड, द हाइड्रोजन आल्सो गॉट मल्टीप्लाइड एंड इट बिकम्स 4 हियर. ठीक है. So my only sulfur is balanced. Now I have to balance hydrogen and oxygen. So first I am going to multiply 2 so that it becomes 4 here. तो इसके आगे मैंने 2 लगा दिया. ठीक है. Clear यहाँ तक? It becomes 2 here. Now oxygen has been balanced in both the sides. अब बारी आती है हाइड्रोजन की. अब इस हाइड्रोजन के आगे अगर मैं 2 लगा दूंगी, so 2 it becomes 4 here. ठीक है. Hydrogen becomes balanced but sulfur becomes unbalanced now. ठीक है. ये दोनों तो बैलेंस हो गए लेकिन सल्फर मेरा अनबैलेंस हो गया. तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 here. फाइन. तो इस 2 के लगने से मेरा सल्फर तो बैलेंस्ड हो गया बट अब ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड, बिकॉज 2 into 2 दिस इज योर 4. 4 plus 2 it becomes 6 now. ठीक है. तो इसको 6 बनाने के लिए तो ऑलरेडी मैं इसके आगे क्या लगा दूं, 3. ठीक है. दैट इज 3 into 2. नाउ इट बिकम्स 6 here.
ठीक है। तो कभी भी ऐसी बैलेंसिंग आती है जिसमें एक ऑड नंबर स्टार्टिंग में आ जाता है और वो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट होता है, एक में इवन नंबर होता है और एक में ए ऑड होता है, तो उस ऑड को पहले इवन बनाना, देन यू स्टार्ट बैलेंसिंग, इट विल बिकम easier to do it. Clear? So that's my second equation. Now moving on to third one. Third is what? Barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a ppt of barium sulfate. Okay, so let's form the compounds formula. Barium chloride, बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो ये क्या होगा? दैट वुड बी BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की 2, so it will form Al2SO4 thrice. Next compound formed is aluminium chloride. This is 3 and this is 1, so it is going to form AlCl3. So this gives me AlCl3 here. Then you have barium sulfate, Ba की भी valency 2, sulfate की भी 2, it gets cancelled off, so you get what? BaSO4 and it's a PPT, so you're going to show it with a downward arrow. So the products are formed. I have formed the formulas by using crisscross method. Let me see now the elements are balanced or not. So we have BaCl, aluminium, sulfur and oxygen. So let's start. What I get here? Ba is 1 and here it is 1. Cl2 is 2, here it is 3. Here aluminium is 2, here it is 1. Then सल्फर 1 है, ब्रैकेट लगने से 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है जी. Then 4 into 3, oxygen is 12 and here the oxygen is 4. So the easiest balancing शुरू करते हैं हम एल्यूमिनियम से, because it seems to be easy, so I multiply it by 2 here. ठीक है, just because of multiplying it by 2, the chlorine also get multiplied by 2 and it becomes 6 here. Okay, so my barium and aluminium are balanced. तो क्लोरीन की ही बैलेंसिंग करने में हमें इजी लग रही है. इसको क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई तो ये 6 हो जाएगा, तो आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 3 हियर. तो इस 3 के लगने से क्लोरीन तो 6 हो गए लेकिन बेरियम 3 हो गए, सो इट बिकम्स 3 हियर and here it is 1, so I multiply it by 3 and we put it like this 3. So if I put 3 here, my barium is now 3, sulfur has also become 3 and oxygen over 4 into 3, that becomes your 12. So see, all the elements on both the sides are equal. So that means if you have write the equation correctly with correct formulas, it will get automatically balanced. So now equation becomes what? Balanced. Now the fourth part is what? Potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. Okay, so let's frame up the equation. पोटाशियम मेटल, बेटा जो मेटल होते हैं वो हमेशा एलिमेंट के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये एटम के फॉर्म में ही होते हैं, तो के ही आएगा, नो K2. ओके,
reacts with water. Water, as you know, it's a water, H2O. Potassium hydroxide. Potassium and hydroxide is OH. Potassium is 1 and OH is 1. So what is going to form? KOH plus hydrogen gas. Since it is a gas, so it will be in the molecular form, that is H2. So this is liberated basically. So let's see hydrogen and oxygen. Potassium here 1 and here 1. Hydrogen here 2, 2 and 1 becomes 3. Then oxygen is 1 here and oxygen is 1 here. Again इसमें देखो हाइड्रोजन क्या है, दोनों एलिमेंट्स में है. तो मैंने आपको क्या बोला था कि पहले हम उसको जो ऑड बना रहा है, मतलब इस H की वजह से इट्स गेटिंग एन ऑड नंबर बिकॉज H2 is 2 and this is 1. So what I am going to do is I am going to multiply it by 2 here so that it becomes even first of all. जब मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो K भी क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया. ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, it becomes 2 now, and H has become what, 4 now. That is 2 and 2, that is 4. Now what shall I do? I should multiply first of all with 2 so that it gets balanced. It has been balanced. Now hydrogen I have to multiply it by 2 so that it becomes 4 here. ठीक है, इस 2 के लगने से हाइड्रोजन 4 हो गया एंड इस 2 के लगने से ऑक्सीजन भी 2 हो गया. सो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बैलेंस्ड. That's my fourth equation. Clear? So moving on to next question of NCERT itself, that is question number 7. What it says, write the balanced equation of the following reactions. So first of all is your calcium hydroxide plus carbon dioxide gives you calcium carbonate plus water. That's my equation. Calcium hydroxide. Calcium having the valency 2, hydroxide having 1. So it is going to form what? CaOH whole twice. That's my calcium hydroxide. Reacts with carbon dioxide to give you calcium carbonate. Calcium is 2, carbonate is again 2. Okay? So this gets cancelled off. You get CaCO3 and water, as you know, is H2O. Let's see it's balanced or not. Calcium, hydrogen, oxygen, and you have carbon here. Calcium is 1, calcium is 1. Oxygen यहाँ 2 है और ये 2 हैं, तो ये 4. ठीक है, वहाँ पे कितने हैं, 3 और 1, ये भी 4. हाइड्रोजन यहाँ 2 है और वहाँ पे भी 2 है. कार्बन यहाँ 1 है तो 1 है. So this equation is already balanced. Let's move to second part. What it says, zinc plus silver nitrate gives you zinc nitrate plus silver. ठीक है जी. So zinc, as you know, Zn, and it's a metal, so I'm going to write it as it is. Silver nitrate AgNO3, that is 1 1 valency. So what I get, AgNO3. Next is your zinc nitrate, zinc की valency 2 और इसकी 1. So this would be ZnNO3 whole twice plus silver, that is going to be Ag. Clear? So let's balance it up. Zinc, Ag, N and O. Okay? Zinc is 1 here, zinc is 1 here. Silver is 1 here, silver is 1 here. Nitrogen is 1 here, but 2 here. Oxygen is 3 here and it's 6 here. So what shall I do? I should multiply it by 2. So n यहाँ पे है तो मुझे इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा. इस 2 के लगाने से मेरे सिल्वर भी 2 हो गए एंड ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया. तो मेरा
Zinc, nitrogen, oxygen balanced है, but silver unbalanced है. So what should I do? I should multiply it by 2. Here I keep it 2. So that's my equation now. Now it get balanced. Okay, moving ahead. Third, aluminium plus copper chloride gives you aluminium chloride plus copper. Okay, so aluminium is Al, copper, and this is chlorine. This is 1, this is 2 here, and this is 1 here. So what I get? CuCl2 here. तो aluminium की 3 और chlorine की 1. So this becomes AlCl3 and copper is liberated. So let's balance it up. Aluminium, copper and chlorine. Aluminium 1 here, aluminium 1 here. Copper 1 here, 2, and this is 3 here. So no way. What I have to do is I have to multiply this as 3 so that it becomes 6, and here 2 so that it becomes 6 here. So इसके आगे मुझे क्या लगाना होगा? 3, और इसके आगे मुझे क्या लगाना होगा? 2. अब इसकी वजह से कॉपर भी 3 से मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, एंड वहाँ एल्यूमिनियम 2 से मल्टीप्लाई होके 2 हो गया. सो कॉपर क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, बट कॉपर एंड एल्यूमिनियम गॉट अनबैलेंस्ड. What should I do? I should multiply it by 2. Here, put it 2 here, and I should multiply it by 3 so that my equation get balanced. D part, barium chloride plus potassium sulfate gives you barium sulfate plus potassium chloride. Okay, let's make it up. बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, तो ये क्या बना बेटा? BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम is K, it is having valency 1. Sulfate SO4 is 2, so it will form K2SO4. ठीक है? It gives you barium sulfate. बेरियम की 2, सल्फेट की भी 2, तो it gives you what? BaSO4 plus potassium की 1, chlorine की भी 1. So I got KCl. ठीक है? Now I have formed the equation. Now balance it up now. Barium, chlorine, potassium, sulfur, oxygen. Barium 1, 1. Chlorine 2, chlorine 1. Potassium 2, 1. S is 1 here, 1, and here it is 4 and 4. So I should start balancing with the chlorine here. So I put 2 here. इस 2 के लगने से potassium भी 2 हो गए. Now the equation has got balanced. Clear? That's your question number 7. Solving question number 8 now. Question number 8, first part. Write the balanced chemical equation and identify the type of reaction. So first, potassium bromide plus barium iodide gives you potassium iodide plus barium bromide. Okay, this is your equation. Let's form
the formulas, first is potassium bromide, potassium की 1, bromine की भी 1, so it would be KBr plus barium की 2, iodine की बेटा 1, so it becomes what? BaI2. Okay. Next would be potassium iodide, दोनों की 1 1, so it would be Ki, and barium की 2 and इसकी 1, so this would be BaBr twice, bromide. Clear? So what kind of reaction it is basically? That is AB plus CD gives you AD plus CB. That means it is a double displacement reaction first of all. So let's start with the balancing. K, Br, Ba and I. Here 1, here 1. Br here 1, here 2. Here it is 1 and here it is 1. And iodine it is 2 here and here 1. So let's start with the balancing of Br. ठीक है, तो इसके आगे मैं क्या लगा दूँ? 2 लगा दूँ. इस 2 के लगने से पोटेशियम भी क्या हो गया? 2 हो गया. ठीक है. So to make it balanced, put 2 here. So I put 2 here. तो it becomes 2 here. तो I भी मेरा कितना हो गया? 2 हो गया. Now I think so the equation has become balanced. B part, zinc carbonate. That's your zinc carbonate plus zinc carbonate gives you zinc oxide plus carbon dioxide. तो zinc कार्बोनेट दोनों की वैलेंसी 2 2 होती है, तो जिंक कार्बोनेट गिव्स यू जिंक ऑक्साइड, इसकी भी 2 और इसकी भी 2. ठीक है. ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोजिशन. अ सिंगल reactant give you more than product, so this is an example of first of all decomposition reaction. ठीक है. तो इसमें जिंक क्या है बेटा? जिंक कार्बन एंड ऑक्सीजन 1 है. ठीक है. उधर भी एक है, कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन था ये. कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है. सो इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. थर्ड, hydrogen plus chlorine gives you hydrogen chloride. Okay. हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में है, क्लोरीन भी नॉन नेचुरल गैस के फॉर्म में है, और HCl, H की भी 1 और Cl की भी 1. So it will form HCl gas here. हाइड्रोजन क्लोराइड. सो इसमें 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो हियर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इट इज 2, here 1, it is 2, here 1. So I have to multiply it by 2. If I multiply, this will get multiplied by 2. Now the equation becomes balanced. So that's it for today. Fourth part you can do it yourself, and I'm going to give you an assignment regarding this. So complete it up and send me on my WhatsApp. I'm sending you the assignments.